Okay, so I'm PGY1, currently working in USA in internal medicine, and throughout my USMLE journey, I had a ton of expenses that I needed to take care of. So I thought I'd make a video of what I learned along the way on how to minimize the cost of USMLEs. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप कॉस्ट सेम ही रहेगी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे एग्ज़ाम फीस, ऑब्जर्वरशिप फीस टू अ लिमिट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But there are a lot of things which you can change, so we'll focus on that in this video. So first thing that I want to discuss is the question bank subscription, whether you take UWorld or any other question bank. अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं पैसे बचाने के लिए, 3 महीने या 6 महीने. I highly advise you to take a year-long subscription of such question banks. I know it sounds paradoxical कि हम तो पैसे बचा रहे हैं तो ये बंदा हमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेने का कह रहा है. So hear me out. The way life works, our plans not always come true, right? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आप 6 महीने में स्टेप 1 दे देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने में ही दें. इट कैन गो बियॉन्ड दैट, एंड देन यूल हैव टू एक्सटेंड योर क्वेश्चन बैंक. फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लिया और 6 महीने गुजर गए हैं लेकिन आपने अभी स्टेप 1 नहीं दिया, तो आपको वो UWorld एक्सटेंड कराना पड़ेगा, और इट कॉस्ट एक्चुअली मोर देन द सब्सक्रिप्शन. लाइक 14 days extend कराने की cost I think $70 है, so that's a lot. What I think is a better strategy is that you should take at least a year long subscription. जब आप step 1 दे दें और UWorld आपका कुछ महीने अभी भी बचा हुआ है, so you can sell it back to other people. There is a good market for that. So that's what one of my friends did. He bought a year-long subscription and he was done with step 1 in 8 months. So he sold the rest of the UWorld to some of one of his colleagues. So that's what I want you to think about. Besides that, I also want you to not use random resources. Like for example, आपने Facebook चलाई, फेसबुक पे किसी बंदे ने लिखा हुआ कि मैंने एक्स रिसोर्स यूज किया और बहुत अच्छी है, तो आपने भाग के उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली. डोंट डू दैट. ओनली यूज टाइम टेस्टेड हाईली रिकमेंडेड रिसोर्सेज. अब जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज एक लिस्ट बनाई है, यू कैन वॉच ऑन माई चैनल ऑल दोज सब्जेक्ट वीडियोज, what resources you can use for that subject. It has patho, physio, anatomy, biochem, physiology, etc. So only use time tested and highly rated resources, and don't spend extra money on relatively new unknown resources, right? Besides that, I think flights to and from USA are very expensive. So इसको भी आप at least थोड़ी सी cost cut down कर सकते हैं. Flights at least 3 महीने पहले बुक कराएं. जब भी आपने यूएस जाना हो तो उससे 3 महीने पहले आप अपनी डिपार्चर और अराइवल फ्लाइट्स बुक करा लें, क्योंकि जब आप लास्ट मिनट का वेट करते हैं, इवन अ मंथ बिफोर योर टाइम ऑफ डिपार्चर, द फ्लाइट टिकट्स विल स्टार्ट टू गेट मोर प्राइसी. So to save all that money, you should micromanage all this and plan your travel in advance and book your ticket at least 3 months prior. 2 months भी ठीक है, लेकिन ideally I would like them to be 3 months prior. Micromanagement is the key here, right? Once you reach US, 2 words: Dollar Tree. Remember these 2 words. This franchise of grocery store is going to be your best friend. Dollar Tree पे हर चीज $1 की होती है, so you'll get common stuff like ketchup, mustard, even eggs and different peppers. Like most of the things you'll find on a good Dollar Tree. तो आप वहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग कर लें, और जो चीज़ डॉलर ट्री पे अवेलेबल ना हो, जैसे कि मीट, हलाल मीट और इस तरह की चीज़ें, तो वो आप वॉलमार्ट से ले लें. वॉलमार्ट इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वॉलमार्ट काफ़ी बड़ा है और वो बल्क में परचेज करते हैं, तो उनकी प्राइसेस बाकी
जगहों से काफ़ी लो होती हैं. So I think it's worth it to visit a Walmart once in a while. So पहले Dollar Tree, उसके बाद Walmart. It helped me a lot to keep my living costs down and my grocery prices down. So you should try that as well. Apart from that, if you're living in Chicago or NYC or any other big city, never use Uber to go to your observership. The bus transport and the train transport system in Chicago and New York City is so great and so cheap. Like you can buy a monthly card and you can have unlimited rides on a train or bus in Chicago or New York. Or I know that Philadelphia has a train system, Washington has a train system. Even I live in Grand Rapids and it's a very small city, not as big as Chicago or New York, and even it has a very good bus system, and I use that. So yeah, public transport is going to be your best buddy, and use Uber or Lyft as a last resort, right? This is another thing that I would like to discuss. अगर आप किसी senior resident को जानते हो या कोई आपका friend है जो residency कर रहा है USA में, you can ask him to let him live with you, and in return you'll help him with the household. Like आप उसको politely बोलो कि आप उसके पास 1 महीने के लिए रहना चाहते हो, और in return आप उसके सारे घर की मतलब cooking और cleaning वगैरह कर दोगे. Residents are busy people and most of the people will be happy to have extra help. Like resident बेचारा वैसे ही शाम को 6-7 बजे थक के आता है, तो अगर कोई बंदा उसकी पहले से ही उसके घर का काम शाम कर दे और उसको खाना वगैरह बना दे तो लाइक और क्या चाहिए, राइट? सो दिस वे यू कैन मिनिमाइज ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि एटलीस्ट 600 पे करते हो आप महाना फॉर रेंट. There was a time I used to pay $800 for my rent while I was in USA doing my observerships. So this is a great option if you know someone. Okay, so definitely look into that. Moreover, you can save in the observership costs. As a general rule, never pay more than $1,000 for a single observership. I know बहुत सी ऐसी companies हैं जो $3,000 $4,000 मांग रही हैं एक observership के. So don't fall into that trap and try to minimize the cost of observerships. Ideally an observership should be free, right? क्योंकि आप उस डॉक्टर की ultimately help ही कर रहे हो, but that's not the case. So people do ask for money, but as long as it is below $1,000, I think you should take it, but never pay more than $1,000. इसके अलावा कुछ hospitals official observerships भी देते हैं, तो उनकी तो obviously उनकी cost भी इतनी बनती है because it's a learning experience and they're only asking for tuition fees. I have a list of observerships, both hospital and clinic, on my Patreon, so you can support me on Patreon and access that list. इसके अलावा save in terms of clothing and toiletries. As a general rule, take all your clothing from your home country, right? USA में clothing काफ़ी expensive होती है, और take advantage of the double 23 kg luggage rule. Like most flights allow you to take 2 bags of 23 kg each, so that's a lot of weight, right? तो उसका फायदा उठाओ और अपने बैग्स बिल्कुल फुल करके जाओ, like at least 22 kg in both, so that you won't have to buy new clothes in USA. इसके अलावा टॉयलेटरीज यानी शैम्पू, टूथपेस्ट, ये भी सारे अपनी सप्लाईज लेके जाओ, because that adds up, right? The more stuff you take from home country, the less you'll have to buy from here. So that's one way to minimize the cost, right? So that's it for today, guys. अगर आपके mind में कोई इस तरह की कोई tip है तो do share it in the comments, and if you have any questions you let me know in the comments. अगर आपको observership की list चाहिए, so you can follow me on Patreon. Meanwhile, I want you to like this video, share with your friends and subscribe, and I'll see you in the next video.